Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss applications of Lagrange's equation of motion for simple pendulum. Let's begin. एठारे आमे सिंपल पेंडुलम रो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिवा लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिकी a simple pendulum that is consists of a spherical bob which is suspended by an inextensible light string from a rigid support such that it can oscillate about its mean position O. This is a string गोटे स्पेरिकल बब जो स्पेरिकल बब टी स्ट्रिंग साहाय्य सस्पेंड ये जो स्ट्रिंग जहाँ को आम एठारे कंसीडर करिछे ए स्ट्रिंगटा इनएक्सटेंसिबल से एक्सटेंड हो पारिबो नाही एवं लाइट स्ट्रिंग तार मासलेस स्ट्रिंग बोली कहूचे इटा हूँ गोटे सिंपल पेंडुलम रा कंस्ट्रक्शन ए सिंपल पेंडुलम टी तार मीन पोजीशन सहित ऑसिलेशन करुछि मानेकर ए सिंपल पेंडुलम रा लेंथ हेउछि स्मॉल एल विथ द लेंथ ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम टी ऑसिलेशन कंटिन्यू करुछि एट टाइम टी माने सिंपल पेंडुलम टी एतिक डिस्टेंस कवर कला लेट दैट डिस्टेंस एज एक्स एवं ये सिंपल पेंडुलम डायनामिकल सिस्टम को आमे तार जनरलाइज कोऑर्डिनेट साहाय्य रिप्रेजेंट करिबा एई केस रे आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंटटा हेउची यार जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज कंसीडर्ड टू बी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वर्तमान आमे ये सिंपल पेंडुलम डायनामिकल सिस्टम पाई इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिबा लाग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन साहाय्य प्रथम आम लाग्रेंजियन कैलकुलेट करिया पड़िबो लाग्रेंजियन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी तेणु करी आम आर काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करिबा यार काइनेटिक एनर्जी केमिति पाई परिबा हाफ मास वेलोसिटी रो स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर दिस इज द mass of that bob as we taken that string is massless which is inextensible then kori total simple pendulum ro mass ta तार mass of that bob which is suspended by that of string then velocity how to calculate velocity that is the distance travel let me say to travel that distance x it required small t time तेणु करी एई कंडीशन रे velocity v is equal to distance by time that is distance small x let time t required to cover the distance या को आम लिखि परिबा x is equal to v of t
सॉरी वेलोसिटी केमिति कैलकुलेट करवा दैट इज dx by dt dx by dt expression for velocity rate of change of displacement velocity dx by dt which can be written as x single dot क्लासिकल मेकानिक्स रे जाको आम टाइम सहित डिफरेनसीएट करवा ताको आम डॉट साइज रिप्रेजेंट करवा अगेन थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस थीटा इज इक्वल टू आर्क एक्स डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस एल तेणुक एक्स इज इक्वल टू एल थीटा हम बर्तमान एक्स डॉट केटे कैलकुलेट करवा therefore dx by dt is equal to length of that simple pendulum is constant, so L here d theta by dt again ताको आम लिखि परिबा that is x dot is equal to L here is the theta dot बर्तमान यही सब सब्स्टिट्यूशन आम इक्वेशन रे पुट अप करि परिबा वेलोसिटी होची एक्स डॉट रो वैल्यू केते ना एल थीटा डॉट बर्तमान हम लिखि परिबा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम दैट इज एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इन प्लेस ऑफ एक्स डॉट दैट इज एल थीटा डॉट स्क्वायर so kinetic energy half m l square theta dot square here is equation number 1 next ए सिस्टम रो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करबा पोटेंशियल एनर्जी V is equal to m g h mass acceleration due to gravity and height. Look here, if we consider that as the reference frame, so the distance at that mean position बॉब रो पोटेंशियल एनर्जी की जदि आम जीरो कंसीडर करवा आफ्टर ट्रैवलिंग दैट एक्स डिस्टेंस इट कवर्ड ए हाइट ड्यू टू दैट हाइट अगेन इट एक्वायर्ड ए पोटेंशियल so that potential energy can be calculated by using that technique that here be the position as m that be the position as O, this is N. Now the potential energy can be calculated as V is equal to m g, here height on in place of on what should we write ओएन बदल आम कौन लिखिपर ओएन बदल रे आम ओ एम रु एम एन फेड़ी दे पारिबा ओ एम रु एम एन लेंथ को फेड़ी देले आम ओ एन पाई जिबा तेबे कंडीशन रे ओ एम केते दैट इज एल एम एन केते एतक वैल्यू केते
बर्तमान एम एन वैल्यू को आमको फाइंड आउट करिया पड़िबो। ये आम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यूज करि परिबा। इतक हूँ एल इटा हूँ थीटा तेरे एम एन टा केते आसीबो एल कस थीटा दैट इज एल कस थीटा। एई ट्रायंगल पाई एटा एल लेंथ ऑफ दैट ऑफ पेंडुलम एंगल टा थीटा एतक परिमाण केते आसीबो एल इंटू कस थीटा कार वैल्यू ओ एन वैल्यू मतलब ओ एन वैल्यू को ये पुट अप कर दे परिबा। तबे ये सिचुएशन एल को कॉमन आण हरी 1 माइनस कस थीटा ओ एन बदल रे आम ये लिखि दे परिबा पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू mg एल होल इंटू 1 माइनस कस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। बर्तमान आम काइनेटिक एनर्जी पाइगले पोटेंशियल एनर्जी पाइगले तो लाग्रांजियन को कैलकुलेट कर परिबा। देयरफॉर लाग्रांजियन एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी केते हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी केते एम जी एल 1 माइनस कस थीटा। बर्तमान आम लाग्रांजियन टाको कैलकुलेट करके लिखि दे परिबा। जहाँ ता रखी दियो इक्वेशन नंबर 3। बर्तमान लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिबा। यदि आम लाग्रांजियन इक्वेशन मोशन को यूज करिबा तबे हमर गोटे टर्म दरकार डेल एल बाय डेल थीटा डॉट एवं डेल एल बाय डेल थीटा। प्रथम आम डेल एल बाय डेल थीटा डॉट कैलकुलेट करिबा तापर डेल एल बाय डेल थीटा कैलकुलेट करिबा और फाइनली लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रे से दुटा वैल्यू पुट अप करदेले आम ए पर्टिकुलर सिस्टम पाई इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करि परिबा। तन एल इज इक्वल टू एतिक पाई गले तबे डेल एल बाय डेल थीटा डॉट बर्तमान कैलकुलेट करिबा। याकू विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डॉट रे जदि हम डिफरेंशिएट करिबा ए टर्म रे किछि थीटा डॉट नाही तने ए टर्म रे 0 हो गला। ए टर्म रे केते आछो हाफ एम एल स्क्वायर कांस्टेंट टर्म जे थीटा डॉट रो स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिबा तने केते आछो 2 थीटा डॉट हाफ टू कैंसल आउट आम केते पाई परिबा डेल एल बाय डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू 2 टू कैंसल आउट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर 4 दे दो। एगेन आम दरकार डेल एल बाय डेल थीटा एगेन आम दरकार डेल एल बाय डेल थीटा तो आको थीटा रे डिफरेंशिएट करिया तबे ए टर्म में कोनोसी थीटा टर्म नाही तने केवल ए टर्म रे आम थीटा टर्म अछि माइनस एम जी एल कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव ऑफ 1 as 0 माइनस cos थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा as माइनस sin थीटा। Here is minus sin theta and minus minus plus that is sin theta. Okay, so del L by del theta is equal to minus mgl sin theta. Equation number 5 बर्तमान दीटांग वैल्यू को आम लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन रे पुट कर दबा। नाउ लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन
that is d by d theta, sorry, d by dt of del L del theta dot minus del L del theta is equal to 0. से भैल्यू गुड़िक ये पुट अप करवा तेज डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डेल थीटा डॉट इट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस डेल एल डेल थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0. लक्ष्य कर एम constant, length of that pendulum also constant, m l square constant. Now theta dot differentiate with respect to dt, again that is double dot theta double dot plus mgl sin theta is equal to 0. बर्तमान आम कौन करवा ना एम एल दीपट साइड रे डिवाइड करदे तेज इक्वेशन सॉरी एम एल स्क्वायर दीपट साइड रे डिवाइड करदे तेज ये केते पाइबा थीटा डबल डॉट प्लस दैट इज जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0. मनकर आम ये जो ऑसिलेशन को नेउछे ना बहुत छोट ऑसिलेशन, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. Since we consider small oscillation that sin theta is nearly equal to theta. sin theta बदल हम लिख दे परिया थीटा g by l theta is equal to 0. That the equation of motion for simple pendulum. Equation number 6, which is the expression for equation of motion for simple pendulum. यह हूँ सिंपल पेंडुलम पाई इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ को आम लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके डिराइव कले. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस विजुअल लेक्चर वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज फॉर सिंपल पेंडुलम. वी कंसिडर सिंपल पेंडुलम डायनामिकल सिस्टम. फर्स्ट वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, then potential energy, then Lagrangian, and put these values in the Lagrange's equation of motion, and finally the derived equation is nothing but the equation of motion for simple pendulum. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.